Hello students, am I audible? पेन किधर है? Everybody. So you people, why you are sitting at the back? You can come from. थोड़ा आगे आ जाइए. चेयर को थोड़ा आगे ले आइए. Why you so bad? You can start. मैं देखना चाहूँगा. इधर कुछ कनेक्ट वनेक्ट करना पड़ेगा क्या? कुछ नहीं. कुछ नहीं करना. If somebody is asking to admit, you can just admit them. ओके. Okay. Sorry. All in? Okay. Good evening. My name is J. Prakash Rao. I'll be a JC faculty, at least for the next maybe 40-45 classes, which will be together. We'll try to complete GST, and we'll try that all of you will score very good in this subject, because this is a very interesting subject. The only thing is that you have to take it in a way that it interests you. You need to connect with the subject. Indirect tax as a whole, you need to connect with the subject. Now, when I say indirect tax, the only question that comes to my mind is, why indirect tax? Why am I saying indirect tax? Sir, tax क्या होता है? Anyone? Just a brief. I want to get a brief idea of the class. Ki how many people have heard tax and what they understand by the meaning of tax? Anyone? Please. Meaning of tax. Anyone who has heard the term tax before? किसने tax term सुना है? बोला नहीं है तो हाथ उठा दो बस. Income for the government. So, one point I got is income for the government. Some more points. Charges levied. Charges levied. Charges levied by government. Very good. 2 points. Last knows about tax. Compulsory payments. Yes. By? To be made to the government by public. By public. Fantastic. This class knows about tax. Enforced by law. Enforced by law. Wow. Please, some more points. Anything, whatever is coming to your mind. Tax. Anything.
Payment to the government covered here, okay? No, sir. As in payback. Huh? It will pay back as in Pay? back. Payback. 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 By payback, what do you mean? Right. I mean, paying back from what I have earned. Paying back from what you have earned. Wow. Paying back from what you earn. मैंने सोचा नहीं था इतना पॉइंट्स मिलेगा मेरे को टैक्स का. Good. One more point. Anyone from this side of the class, please. Anything that's coming to your mind, please. So we will pay some parts of our income. Okay. We will not pay as a percentage. We will pay. As a percentage. So one more point we got. As a percentage. So I think the class has a very good idea about tax. Now if I want to explain you tax, or why the tax? Why does government take money from us? Provide services. Wow. So compulsory payment what we are giving. Someone mentioned compulsory payment to be made by the public. Why this? So that government can provide services. Now when I say services, what kind of services? Roads, railways, Roads, railways, security, defense, wow, and healthcare, health. And XYZ, whatever the government does for us. Wow, I am impressed by your ideas of tax. Very good. So, government, because as an individual, we need certain services to survive in the society. We need roads, we need water, we need healthcare. So, what government does, that it collects money from us overall from 125 crore people, billion people in India, although everyone does not pay tax. So whatever percentage pays tax, government collects those monies, it forms a pool, from there it disburses for various kind of services. So when we say, अभी recently today budget का मतलब क्या होता है? What is budget? planning for the whole year. Planning for the whole year, appropriating the income that the government has to the various sector where it needs to spend money. Government says highways may will spend so much, on healthcare will spend so much, on education will spend so much, on defense will spend so much. So when government plans these things that कहाँ कितना spending करना है, it makes targets that I have to collect so much amount of money to spend for these services. So in an overall concept, you understand tax. Now I think what is tax? अभी कोई पूछेगा तो you will be able to say हाँ भाई tax है होगा. सरकार हमसे पैसा लेती है, they take money from us, they spend for social schemes. Now जब ये खत्म हो गया, now I will come to the part where I say, I think we'll keep this. We'll go to the next screen. We'll add one here. Okay. So when I say direct tax and indirect tax, अभी tax हो गया. Tax was this. अब इसका two parts है. In short form, I will write DT, which is direct tax, and the other one is IDT, indirect tax. Now, why direct tax and indirect tax? Next question. Tax का आप लोगों ने बहुत fantastically answer दिया. Tax क्यों होता है? Why there should be tax? Now, my next question is why direct tax separately and why indirect tax separately? Direct tax is to be paid by the some portion of the public directly to the government. They are compulsory.
directly to the government compulsory. Okay. Any more points? Sir, tax which are cannot be transferred to tax which are cannot okay, हिंदी में बोल दो जो भी आ रहा है दिमाग में. I'll reframe it. I'll जो rephrase टैक्स it. मतलब हम दूसरे दूसरे के ऊपर में मतलब कवर नहीं कर सकते वो राइट. Wow, fantastic. Cannot be forwarded. My God. Superb answer. And so if I say, when you say direct tax that cannot be forwarded, so can I say IDT is a tax that can be forwarded? For that purpose? Can I say this? Yes. Do I have the understanding of the class that if someone says DT direct tax cannot be forwarded, then I can easily say that IDT can be forwarded because the word itself signifies indirect. Indirect. See, I am getting points from you only. मेरे को तो पढ़ाने का जरूरत ही नहीं है. You people know so much. You have to just keep bringing in. One more point, please. Anything that's coming to your mind. I think this section is giving answers. I need to concentrate on this section. Please. एक point आपको देना पड़ेगा. Whatever is coming to your mind, please. आप भी कुछ बोलना पड़ेगा. Anything. कोई idea कुछ भी? Sir, हाँ, yes. direct tax is imposed on incomes and profits, whereas the indirect tax it's basically imposed on goods and services. Wow. Direct tax. It is directly paid to the government, but for the indirect tax, it is paid. There is an intermediary while paying the indirect tax. Thank you so much. Thank you so much. I think this thing grossly sums up. This point itself grossly sums up what is direct tax and indirect tax. If you see only this, your good name, please. Sir, Mehak Agarwal. Thank you, Mehak. Thank you so much. Direct tax is on income. Indirect tax is on goods and services. I was searching for this answer. Now we have understood what is DT, what is IDT. I guess we have understood. Any doubts, further doubts, I'll explain it by an example, obviously. But on the basis of this discussion, are you able to classify what is direct and indirect tax? Okay. So, screen को अगर Another thing, sir, direct taxes directly goes to central government, but indirect tax goes to state government as well as central government also. Okay, sir. Okay, you are right partly. It goes to the central government. Only. It goes to the central government only. And This goes to state and both to state and central. perfect answer, sir. Nice. So very nice answer. Thank you so much. This was also a very good answer. Matlab, direct taxes goes to center only. Indirect taxes are shared. Now this shared concept is a different topic in itself. So I didn't want to go, but because sir has given us a point, we can hold it from there. How this distribution occurs, what part has to go to central government, what part has to go to state government. This is all we will talk about GST. So I've coined the term GST to you.
Now we'll start speaking about GST and its applicable consequences. GST law will tell us what amount center will collect, what amount state will collect, what proportion it will collect, what is the input credit mechanism, everything. Now input credit and all these we will discuss slowly. These are new terms for you. So we'll go very slowly. The first two classes will be purely basic. Purely basic. I need to build an understanding of tax to you. Then we'll go into the nuances of the law. कि law क्या बोलता है, law क्या करता है, law कैसे credit distribute करता है, law कहाँ tax मांगता है, law कहाँ बोलता है यहाँ GST नहीं लगेगा. This will go according to the book or the syllabus that has been given to us. And from the exam perspective, I'll discuss it later. कि कैसे questions आते हैं, क्या आता है. We can do that later. Let us first get the concept. So when I say I'll give you an example of direct tax and indirect tax. Say I am a teacher whose fees is 10,000 rupees. I have come to take your class. Duliajan chapter has hired me on contract. They have said, okay, you take X number of classes, we'll pay you, say, 10,000 rupees. My fees. 7,000. नहीं, overall बोल रहा हूँ मैं. I have been contracted to teach GST to you for this session for 10,000 rupees. So when I say 10,000 rupees, is this my income? Yes or no? Yes. My income? GST में it says, because now what I am doing is I am providing services of education. I am a teacher, so I am providing you a service. I am teaching to you. This is a service defined under the Act. I am teaching. So when I say teaching is a service, so as per the last comment given by Mehak, she said that on goods and services, indirect tax. So as a teacher, I am giving you a service. I'll have to pay indirect tax because I am earning 10,000 rupees. Now, what I am earning actually, that I will tell you by an example. As per law, when I will quote, say the chapter contacted me, they said that you have to take classes for GST. I said my fees is 10,000. I am a registered GST person. I have been registered with the government that I provide services of teaching. So the government says that whenever you go to provide a service, you have to take GST from where you are providing the service. So I will take GST from Duliajan chapter because I am providing service to Duliajan chapter. So when I will make an invoice, when I will make a bill, teaching charges 10,000 rupees, GST on that, this is just an example, tax rate 18%. 10,000 ka 18% is how much? 1,800. So my fees is 10,000. My GST is 1,800. Total is 11,800 is my bill value. यहाँ तक क्लियर? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं? ये मेरा बिल वैल्यू है. दुलियाजन चैप्टर को मैं जब बिल रेस करूंगा तो मेरा बिल ऐसा दिखेगा. ठीक है? नाउ टेल मी, इज दिस 1,800 my income or not? No? मेरा इनकम नहीं है ना ये मैं दुलियाजान चैप्टर से कलेक्ट करूंगा, फिर किसको दूंगा? वाओ, this I will collect and give to the government. Now सेंटर को देना है कि स्टेट को देना है, that will come forward in the chapter.
we'll understand that how this amount will get distributed. Our basic concept is clear that this is not my income. This is, I am collecting on the behalf of the government. गवर्नमेंट ने मेरे को बोला भैया तुम उससे पैसा लो और मेरे को दे देना. This is indirect tax. The effect is not on the person providing the service, but on the person taking the service. Your cost is 11,800, right? Not 10,000. Your cost is 11,800 because you are paying 11,800. But what you are giving to me as an income, I will treat only 10,000 as my income because this is I'm just an intermediary. I'll take it from you, give it to the government. Okay? So अभी 11,800 हो गया. Now say तुमको पढ़ाने के लिए मैंने ये टीवी सेट खरीदा. समझो ये दुलियाजन चैप्टर ने नहीं दिया है. This is my classroom. Dulian chapter has taken it from me, or I have provided some stationery. I have some traveling expenses. I come from far. I made some study material for you. Blah 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 blah. उसके लिए I incurred some expenses. ठीक है, मेरे खर्चे हो गए तुम लोग को पढ़ाने के लिए. Now वो खर्चे मेरे कितने हो गए? मान के चलो 3,000 rupees. So what is my net income now? Is it 11,800 minus 3,000 or 10,000 minus 3,000? Clear? 10,000 minus 3,000 is my net disposable income in my hand after cutting all my expenses. Now the government will say that you have earned 7,000 rupees, Baba. I am allowing you this 3,000 expense. I am fine with that. तुमने 10,000 कमाया, 3,000 तुम्हारे expense हुए in course of teaching, that we agree. But जो तुम्हारा final income है 7,000, इस पे तो आपको tax देना पड़ेगा. Then the government says, okay, यहाँ पे तुम हमको direct tax दो, जो slab rate के हिसाब से होता है. That I'll not go into. Direct tax is also slab rate wise. For income up to this, you need to pay this percent. Income more than that, you need to say X percent. And income more than that, there are slabs. So I'll consider my slab as 30% say. 2,100 rupees मेरा tax चला गया. क्या balance बचता है? 7,000 minus 2,100. It is what? 4,900. So देखो घर में मेरे कितना आया लास्ट में. सबको लगता है 10,000 रुपया लेता है टीचर, बहुत महंगा है. घर में क्या आया? आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया. So what I mean to say is this is the difference between IDT and DT. DT I pay directly on my income, मेरे income पे. IDT मैं collect करता हूँ. I just collect it on behalf of someone. Someone is the government of India. I collect it, I pay to them. So इस example में किसी को कोई doubt? Is DT and IDT clear? 15 minutes back, was it so clear, or is it clear now? 15 मिनट पहले इतना clarity था, तो कुछ सीखे आज हम लोग. Something we learned today, and this is the very basic that has to be always with you in the future. So in the next 15 minutes, we will now explore कि basic में input क्या होता है, how this transaction of GST is impacting the cost, GST कैसे बना, पहले क्या होता था, post GST मतलब pre GST, what were the rules,
Now we will explore slowly those things. So I want you to show a slide. Wait, I think this will help. So इस स्लाइड को देखो, क्या समझ में आ रहा है? एग्जिस्टिंग यू कैन से चला गया, अभी तो और एग्जिस्टिंग नहीं है सर, इसको लिख सकते थे ना? Not my board का ओके एग्जिस्टिंग तो यू कैन नॉट से, मैंने इसलिए लिखा है कि तुमको मैं प्री जीएसटी के बारे में जैसे वी आर इन प्री जीएसटी वो चीज समझ सके. Now what you are seeing to your left, these are the central levies. Someone said from the this thing ना कि सरकार को भी जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को जाता है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है आईडीटी, indirect tax. So these are the examples that what used to go to central government and what used to go to state government. Customs duty, excise duty, CST, सर्विस टैक्स. ये चार चीज एक्सप्लेन करने में आपको बहुत टाइम लगेगा. टू एक्सप्लेन यू व्हाट दिस सेंट्रल लेवीज आर, इट्स इटसेल्फ अ बिग थिंग. पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि ये लेवीज क्यों लगते थे, इसको हटाने का क्या कारण है, व्हाई जीएसटी वाज ब्रॉट इन. ये स्टेट लेवीज को भी समझेंगे एक एक करके, ठीक है? वैट है, लग्जरी टैक्स है, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स. नाउ व्हेन आई से someone from I think Mahek again said goods and services. Where did that go? Board again. So again goods and services. In that previous PPT slide, we saw excise duty. So ये रहना पड़ेगा. One we saw excise duty and one we saw service tax. अभी goods and services को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. In the pre-GST era, जब GST नहीं आया था, goods and services को एक कॉमन बोल के हम लोग बात नहीं करते थे. We did not used to talk commonly. Goods and services नहीं बोलते थे हम लोग, ठीक है? We used to speak of goods separately, services separately, because there were two different laws for taxation of goods and taxation of services. Now there is only one law, which is goods and service tax, which deals with both goods and services. Now when I say about goods, excise duty. Excise duty was used as a taxation point, you can say, or a duty on manufacturing of goods. ये टेबल जो बना है ना, ये जब मैन्युफैक्चर हुआ होगा, फैक्ट्री से निकलने से पहले इसके ऊपर टैक्स दिया होगा मैन्युफैक्चरर ने. ये पीसी बना होगा, पीसी फैक्ट्री से निकलने के पहले मैन्युफैक्चरर ने टैक्स दिया होगा. दैट टैक्स यूज्ड टू बी कॉल्ड excise duty. So in a very brief manner, what we can say, excise duty was a duty which was levied on manufacture. Whenever you manufacture any goods which is excisable, that is subject to excise, उसके ऊपर excise duty लगता था. So this was goods, ठीक है? And when I say service, टीचर वाला एग्जांपल जो दिया आपको, अगर मैं टीचर होता प्री जीएसटी एरा में, तो मैं इनवॉइस में जीएसटी नहीं लिख के सर्विस टैक्स लिखता, बिकॉज आई एम प्रोवाइडिंग अ सर्विस, ठीक है? सो अभी जीएसटी में क्या हुआ, दिस पोर्शन बिकेम वन.
अब दो इनैक्टमेंट नहीं है, दो लॉ नहीं है, दो लॉ नहीं पढ़ना आप लोग को, एक लॉ। हमने जब पास किया हमने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। कस्टम ड्यूटी अभी भी पढ़ना है आपको, बिकॉज कस्टम ड्यूटी इज स्टिल देयर, बिकॉज इट इज आउटसाइड इंडिया। ठीक है, सो दिस पार्ट गॉट सबस्यूम्ड इनटू वन. We'll further talk about how many taxes got substituted, but basic example which I want to give is this, कि क्या हुआ, ये और ये मिल गए, बन के एक हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स. सो अभी फैक्ट्री से अगर आप ये चेयर बनाते हैं तो अभी एक्साइज ड्यूटी नहीं लगता है, जीएसटी लगता है ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स. नाउ वी कॉल इट अ सप्लाई. नाउ इट हैज बिकम सप्लाई ऑफ गुड्स. पहले मैन्युफैक्चर था, मूवमेंट था, these terms were there which you would not know, but now for you it is always supply of goods. Indirect tax is levied on supply of goods and services. So ये हो गया, this we explained to you. Customs duty I'll come later. Customs duty is still there, वो GST के साथ subsume नहीं हुआ है. Central sales tax was again a central levy. अभी एक एग्जांपल मैं अगर लूं, से आई एम अ टी कंपनी ओनर इन असम. असम में चाय बहुत उगता है, असम इज फेमस फॉर इट्स टी. नाउ से आई सेल माय टी प्रोड्यूस, द फाइनल प्रोडक्ट चाय अगर मैं असम से वेस्ट बंगाल भेजता हूं, इफ आई सेल इट फ्रॉम असम, आई सेल इट टू अ कस्टमर इन वेस्ट बंगाल. इन दैट एरा, प्री जीएसटी एरा, जो ये ट्रांजैक्शन होता था असम से वेस्ट बंगाल जो गया, इसके ऊपर सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था. सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, किसको देना होता था? सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता था. और कौन कलेक्ट करता था? ये वेस्ट बंगाल को बिल करता था, भाई आपको मैंने इनवॉइस भेजा 100 रुपए का चाय, आप मेरे को इसमें सीएसटी, जो भी सीएसटी रेट था से 5% आप मेरे को दे दो. 105 ही होगा ना 5%. दिस वाज यूज्ड टू बी कलेक्टेड बाय द असम गवर्नमेंट. ठीक है, व्हेन आई से यूज्ड टू बी कलेक्टेड बाय द असम गवर्नमेंट, आई एम ओपनिंग अप अ न्यू फेज इन द डिस्कशन कि दिस टैक्स जो एक्साइज सेंट्रल सेल्स टैक्स होता था, एक्साइज ड्यूटी होता था, these were origin based taxes, not consumption based taxes. बहुत न्यू चीज है ये. What is origin based tax? What is consumption based tax? जहां से गुड्स बना, मैन्युफैक्चर हुआ, ठीक है, that state used to collect that tax and utilize it for themselves. ठीक है. What is consumption based tax? जहां पे गुड्स फाइनली पहुंचे वहां पे यूटिलाइज होता था, वहां टैक्स पे होता था. So the difference between origin based tax, consumption based tax, as we go through the chapter, the GST law, we'll explore it. हर एक एग्जांपल में वो आएगा. So we discussed all the three taxes, I guess, and yes, state levies है. VAT, what is VAT? VAT was value added tax. What is value added tax? Why the name value added? Value added. I manufactured a goods of 1000 rupees. Yeah, I procured a raw material. से मैंने कपड़ा, मैं शर्ट बनाता हूँ, I manufacture shirts. I took raw material, मैंने एक कॉटन का क्लॉथ खरीदा, that is my raw material. I have a shirt making factory. I bought this raw material for 1000. In the factory, शर्ट बनाने के लिए I incurred say 700 rupees. शर्ट बनाने के लिए I put the buttons, स्टिचिंग किया, कटिंग किया,
सब किया, शर्ट को रेडीमेड किया, पैकिंग किया for the open sale market. Now this 700 is called value added. I added value. और मैंने ये जो वैल्यू ऐड किया इसके ऊपर मैंने वैल्यू एडेड टैक्स पे किया 12.5%. This is value added tax. So every stage of the process जहां जहां वैल्यू ऐड करते थे वहां पे टैक्स इंपोज होता था. This was value added tax. Now we will also talk about what was the reason that VAT and all these things got subsumed into GST. We'll talk about cascading effect of taxes, but we'll slowly go through it. मतलब पहले basic understanding ले लें हम लोग कि एक बार comfortable हो जाए terms के साथ, then we'll go कि हाँ भाई क्या क्या होता था. Okay? So basic, this screen is clear. I'll go to the next slide. Sir, can you shift the slide little bit? Slide. Wait. Yes. Sir, little bit downward. Yes, sir. Is it okay? Yes, sir. Now Clear? it's okay. Okay. Anyone, if people doing online, any doubts you can please shoot. Okay. So अभी आगे ये बड़ा वाला गोला गोला क्या बना दिया मैंने, all big circles. So what we were talking in the previous slide, excise duty, service tax, surcharge and cess. ये slide ठीक से आ नहीं रहा है. I think वो एनिमेशन इसमें काम नहीं कर रहा है. एनिमेशन काम नहीं कर रहा है. ठीक है. इसके पीछे ना कुछ कुछ और जो मैंने स्टेट लेवीज बोले थे, वैट है, लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स, all these things. This is CST, CBD and SAT. Now just think this as a big circle. Now we'll understand कि किसी ने बोला था कि सर टैक्स डिस्ट्रीब्यूट होता है, स्टेट को भी जाता है, सेंटर को भी जाता है. अब इनमें से जो सब टैक्सेस कंज्यूम हुए थे, ये एक सेक्शन है, मानो ये एक सेक्शन है और ये एक सेक्शन है. When I say that all these taxes got into one and became GST. Now when I say all these taxes became one, it went through these roads. पहले CGST, SGST, IGST, and these three big circles went into the very big circle called GST. GST is goods and service tax. CGST is central goods and service tax. SGST is state goods and service tax. IGST is integrated goods and service tax. So this portion got subsumed into this. Via बोल रहा हूं मैं. You can also say that all this got into this, but I want to see मतलब कौन से छोटे रास्ते से बड़े गोले में गया. तो ये सब जो थे वो चले गए CGST में. This VAT, purchase tax, luxury tax, because these are all what? State levies. ये पहले state लेता था हम लोग से. VAT was always used to be collected by the state. It was the revenue for the state, not for the center. So these got subsumed into SGST. And this CVD and SAD में अभी उतना उसमें जाना नहीं चाहता because you will not be able to understand. CVD का full form मैं बता दे रहा हूँ. It is called countervailing duty, and SAD is called special additional duty. This you will come across when we study customs. ठीक है? These went into IGST. And ये तीनों जाके बन गए GST.
Clear? Union Territory Goods and Services, UTGs. Because हमारे कुछ यूनियन टेरिटरीज भी है ना. Delhi is a UT. Do you know that? पता है? Delhi being the capital of India is a union territory. By union territory we always identify कि छोटा मोटा होगा है. दिल्ली हमारा राजधानी है, it is a union territory. Chandigarh is a union territory. Pondicherry is a union territory. So these are union territories. Union territories का एक this will also come in our discussion for taxation purpose. See, union territories are identified or they GST उसको दो पार्ट में आइडेंटिफाई करता है. Union territories which have their own legislature or union territories which do not have their own legislature. By legislature I mean their tax laws or the अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए टैक्स लॉ से समझो. जीएसटी वहां उसको आइडेंटिफाई करता है. दैट विल डिस्कस लेटर ऑन कि कैसे आइडेंटिफाई करता है, क्यों होता है, व्हाट इज विदाउट लेजिस्लेचर, व्हाट इज विद लेजिस्लेचर, विल गेट इनटू दोस थिंग्स. सो ओवरऑल और 15 मिनट मैंने अभी बोला, इस 15 मिनट में कुछ और ज्ञान मिला आपको? समथिंग टू टेक ऑफ, सम एनरिचमेंट. बोर नहीं कर रहा हूं ना? Anyone getting bored can go and take a walk or stroll something. Okay. Now, जो मैंने पहले बताया आपको, taxes which will not get subsumed under GST. I said customs duty because this is a separate chapter. Why customs duty? I will give you a मतलब very brief. Why customs duty cannot be subsumed into GST? Custom duty क्या होता है? Custom duty is a duty which is imposed when you bring anything from outside India. When you import something, custom duty is a tax on import. GST deals with domestic taxes only. Some of the examples which I gave you, like special additional duty or countervailing duty, these are not basically import taxes. That is why those got subsumed into GST. Though they are read with customs law as such, जब हम लोग customs law पढ़ेंगे वहां पे आप लोगों को CVD, SAD ये सब आएगा, पर those are not directly related to imports or import duties. Those are substitute duties to stop import. Now when we are getting into the group, I'll explain you CVD. अभी समझो ये पेन बनाता हूं मैं, सैमसंग बनाया ये पेन. इंडियन कंपनी है इंटेक्स, वो भी बनाती है ये पेन, स्मार्ट पेन. नाउ टू सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू सपोर्ट इंटेक्स, बिकॉज सैमसंग इज अ वेरी बिग कंपनी, इट हैज लॉट ऑफ रिसोर्सेस, बहुत कम दाम में वो भेज सकता है, अच्छा टेक्नोलॉजी देके भेज सकता है. To support the Indian manufacturers so that they can also compete with the other big manufacturers, एक CVD ड्यूटी लगता है, which is countervailing duty. इस प्रोडक्ट का कॉस्ट को बढ़ाने के लिए, ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो हैं they can have a level playing field. Just a very broad example I gave you. मतलब क्या होता है CVD, मतलब ब्लैंक में नहीं रहना कि हाँ CVD सर ने बोला था बताएंगे बताएंगे. CVD ये होता है countervailing, to counter something, that is CVD. ठीक है, तो कस्टम ड्यूटी मर्ज नहीं हुआ, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, ओके ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटी नॉट रिक्वायर्ड. स्टेट टैक्सेस में टोल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ये सब तो स्टेट सब्जेक्ट है. जमीन पे स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, टोल टैक्स. टोल टैक्स क्या होता है? इस टोल टैक्स एन इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स? हाँ हाँ नहीं, मेरे लिए वो क्या है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? टोल टैक्स. सो ये सब जीएसटी में नहीं है. और क्या नहीं आया जीएसटी में?
Petroleum products. Petrol, diesel, crude. Crude, we are sitting on crude here. All India Limited. पर ऑल इंडिया लिमिटेड ने जीएसटी कंसल्टेंट हायर किया है, क्यों किया है? क्रूड पे तो है नहीं भाई जीएसटी, जो लगता ही नहीं है जीएसटी, तो किस लिए जीएसटी के लिए हमारा एक डिपार्टमेंट है सेपरेट. फॉर योर नॉलेज, वी हैव अ सेपरेट इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट. क्यों? Because we take services, we buy products. We buy many products like pumps, like engines. Then we take services also from contractors. But अगर this question should have been posted later, but क्योंकि मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ये जो तुम खरीदोगे इस पे तो जीएसटी पे करोगे, लेकिन तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट जो है ये क्रूड, उस पे तो जीएसटी लगता ही नहीं है. तो क्या फायदा डिपार्टमेंट रख के एक अलग सा? Because Oil India also has pipeline services. पाइपलाइन है ना, उस पे तो एग्जम्पशन नहीं है, वो सर्विसेज पे तो जीएसटी लगता है. क्रूड के एक्सप्लोरेशन पे नहीं है जीएसटी, क्रूड बेचने पे जीएसटी नहीं है, पर जो हम क्रूड ट्रांसपोर्ट करके दूसरे जगह पे भेज रहे हैं रिफाइनरी को, ऑयल इंडिया का कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना सबको? एवरीवन नोज ना व्हाट ऑयल इंडिया डज. तेल निकालते हैं, पाइपलाइन में डाल के रिफाइनरी को भेज देते हैं, रिफाइनरी क्रूड को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, एविएशन, टरबाइन फ्यूल ये सब बनाती है. तो ये नहीं है, इसके वजह से स्पीकिंग ऑफ विच, इसके वजह से बहुत सारे कंपनीज का, ऑयल कंपनीज का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ गया है. You will be able to relate with me this sentence when we will discuss input tax credit in our next or maybe next to next class. Alcohol for human consumption GST में क्यों नहीं है? Because it is a state levy. It is a state levy. इसका authority article Constitution of India में बोला हुआ है कि the power to collect tax on alcohol is only with the state. पावर सेक्टर में जीएसटी. ये एग्जांपल हम लोग आज करें या कल करें? कल करते हैं ना, नेक्स्ट क्लास भी है. आई थिंक बहुत सारा इनपुट चला गया आज के लिए. एनीवन हु कैन ब्रीफ मी व्हाट वी डिड टुडे फॉर द एंटायर 50 मिनट्स? आई वांट आंसर्स फ्रॉम दिस साइड प्लीज. क्या ब्रीफ, क्या पढ़े हमने आज पूरे 50 मिनट्स में, 45 मिनट्स में? जीएसटी तो पढ़ा है, वेरी स्मार्ट है हम लोग. मैं तो सोचा है आप सेंट्रल एक्सेस पढ़ रहे हैं. जीएसटी में क्या पढ़ा है? जस्ट अ ब्रीफ, क्या कवर किया है? मैं रिवीजन चाहता हूँ कि मतलब कि पिछला भूल ना गए. मतलब बस ऑनलाइन एविडेंस. क्या है? ऑनलाइन एविडेंस. हाँ. So my live audience is not giving me answers. I request the people who are online, can we have a brief revision of what we did today? Hello. अब चले गए लग रहा है. या तो मैं ऑडिबल नहीं हूँ या तो लोग चले गए. Sir, you are audible. Sir. I am just learning. Okay. Sir, was I able to make the basic concepts clear? Basics, if you have any doubts, we can discuss. Okay, sir. आप भी बताइए. Excise tax, indirect tax. Okay. Types of GST. What is the earlier tax structure? Which taxes are subsumed? Which taxes were subsumed? Earlier tax regime. For all different types of GSTs.
state, central. Different types of GSTs, CGST, SGST, IGST. And which GST कहाँ पे impose होता है? Yes. Which taxes are taken by the central government, which are taken by the state? State government. I need answers from this side. एक आंसर तो बनता है. One answer. Come on. Everyone has to be involved in the class. कोई एक आंसर. What you learned? कोई एक चीज बताइए. No. सर जीएसटी कैसे फॉर्म हुआ? Wow. Yes. GST कैसे form हुआ? Okay. GST is levied on the person taking the service. Then is taking the service. Person taking the service. The cost is for the person taking the service, not providing the service. Yes. Goods exempted under GST. Goods exempted under GST. Briefly, we read about what are the goods that do not get covered under GST. We'll say exempted, and we'll also discuss what are the services. There's a schedule 2, जो just specifies us कि इस services पे GST नहीं लगेगा. That is a separate topic. These are basic exemptions. Which goods के ऊपर service GST नहीं है. ठीक है. I think this squarely covers what we did today. I hope you got a brief understanding of what GST is, what indirect tax is. Any doubts are welcome, or else we'll log off. People doing it online, any doubts are welcome, or we'll log off this class for the time being. बोलिए. I have a doubt. Yes. One there. One. One doubt in there. VAT. This is the tax levied on the railway that was. So if you go to a restaurant. Okay. And they order something. Okay. Chow Mm-hmm. Then will the cost of the chow mein which they buy, which the raw product which they buy, like chow mein, then they buy the cabbage, sauce and all. So which will be the value, the value they will charge? Then what kind of value? Say when you go to a restaurant, you open a menu, you see your noodles cost is 200 rupees. ठीक है. नीचे में एक लाइन स्टार देके लिखते हैं. The above prices are exclusive of taxes. When they say the above prices are exclusive of taxes, they mean to say my base price is 200, sir. What you will eat on that you have to pay VAT to me. Whatever VAT percentage has been specified in the Act on food services. 200 you have to pay. On the entire 200 you have to pay. For him, it is the entire 200 is the value added. Because he's selling a final product to you. Final product. Had it been, when you ask this question, these are phases which will come to input tax credit, we will discuss. अगर ये phases में आया होता, कॉटन का आयरनिंग हुआ, वो एक डिपार्टमेंट है, या तो एक कंपनी है जो कॉटन को ऐसे तैयार करती है जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए बन जाए, मतलब शर्ट में डायरेक्ट फिट हो जाए. 2-3 अगर phases होते, then we would have discussed the flow of VAT. वहां लगा, यहाँ लगा, कितना वैल्यू पे कितना लगा, ऐसे डिस्कस करेंगे. So what we'll do, we'll take up an example, mathematical example, full sheet, जो आज था, लेकिन we'll discuss it later. तो उसमें और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे टैक्स परसेंटेज, कहाँ का क्रेडिट कहाँ मिलता है, because this is all credit का गेम. ठीक है, that we'll understand. Next we'll do cascading. Tomorrow maybe we'll do cascading effect of taxes. Then we'll discuss something about input tax credit. वो बहुत होगा कल के लिए भी. So that will be overall basic. Then we'll jump into GST. Okay, sir. Okay. Okay, thank you. All right, sir. Okay. Thank you, sir. Bye, sir. So, students, you want any break or shall we start? You can start. So, after 2 continuous classes, don't feel bored. We will not study anything. Okay. We'll just some just personal talking. No class. Okay.
So don't get bored that this is the third class again. Something will be imposed on you. I want to make it very simple. So I am your faculty for cost management course. There is a paper, cost management and financial management. I will be teaching you the cost management. So we are not going to study anything. We only know how to manage our cost. Okay, if you know that, you can write in the exams. Nothing more is required. Okay, so my students all ready? Before I start, I will talking you cost management. And in my introductory classes, I have discussed about what is cost. I think all of you might have attended, not attended. See, initial 7 days I have taken 5 days classes. I have specifically gave a example what is cost all about it. Anyway, so to make it very simple, we will not discuss anything about cost. Let us suppose just think we are doing a small business. Okay, suppose you what business? Suppose we make something like tea making. Okay, suppose you want to make a tea shop. Everybody familiar with how the tea is prepared? All of you know how to prepare tea. So for making tea, now I want to know what are the items we require for. Suppose you want to make a tea shop. आपका एक चाय का दुकान खोलना चाहते हो आप, छोटा सा चाय का दुकान आप खोलना चाहते हो. You have some customers every day, they will come and take tea. So let me know what are the items I need for making tea to run my tea shop. Sugar. एक one by one. Okay. अब बोलिए क्या चाहिए? पानी. पानी. So what else is required? Sugar. Sugar is required. Tea leaves. Tea leaves. Glass. Glass. Milk. Milk. Gas. Gas. Or else, what else? Rent for us. Sir. A table chair. Table chair. Okay. Table chair. Yes, audience. Please, if anything you want, you can tell. If I want to make a tea shop. Utensil, sir. Utensil. Utensils. Utensil. Utensils. What else? Electricity. What else? Ginger. Ginger. Very good. Without ginger, it is cold. There cannot be any tea. Snacks. Snacks we will put inside the tea. Let us first make tea. We will go to snacks later. Okay, what else we require? Bay leaf. Oh, tejpata. You need ilachi also? I like ilachi. Long, sir. Let us have long tea also. Somebody said lavang. Any other items we need for making tea? Lemon tea. Lemon. But in milk tea you cannot put lemon. So we will have milk or lemon. Okay. Both cannot be used. In the same milk, it will gone. Any other item we need for? Can I drink milk if all things I keep it here? हाँ? बनाने वाला भी चाहिए. बनाना वाला भी चाहिए ना? So you need a labor. आप सब कुछ रख देने से चाय नहीं बनेगा ना? चाय बनाने वाला भी चाहिए. हैं? मैनपावर चाहिए. और क्या चाहिए? ये भी चाहिए सर. क्या चाहिए? तो एक वो तो होना, शॉप तो होना पड़ेगा. क्या चाहिए? Very good. You need a shop also. You cannot do on the street. आपके एक दुकान चाहिए या एक शॉप चाहिए. ठीक है? देखिए कितना सारा चीज आ रहा है. और क्या चाहिए?
वेरी गुड थिंग, यू नीड कस्टमर, पर कस्टमर चीज बनाने के लिए नहीं चाहिए, पीने के लिए चाहिए, राइट? So why I told all these things is that suppose मेरे देखिए, now come to the point, मेरा पहला दुकान जब खुला मैंने 20 कप चाय बनाया, ओके? मेरा कस्टमर डे बाय डे, मेरा जो जिंजर टी वाज वेरी फेमस, सो स्लोली आई गॉट मोर कस्टमर्स, सो नेक्स्ट डे मेरा ऑर्डर आ गया, चलो आज 100 कप बेचेगा। नाउ यू टेल मी, मेरा 20 कप में जितना जितना आइटम लग रहा था, 100 कप के लिए इतना आइटम लगे क्या, और ज्यादा लगाना पड़ेगा? ज्यादा लगाना पड़ेगा। जैसे कि 20 कप के लिए मुझे 1 टेबल चाय चाहिए, 100 कप के लिए मुझे कितना टेबल चाय चाहिए? 100 500। मुझे एक गैस चाहिए, चूल्हा, और 20 कप। 100 कप के लिए कितना गैस चाहिए? एक ही चूल्हा चाहिए, isn't it? So सब कुछ नहीं बढ़ रहा है। अब देखा ना, आपका चाय बनाने में 20 से 100 होने के लिए मेरे को सब कुछ प्रोपोर्शनेटली नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। यही एक चीज हम लोग देखा कि मेरे को 20 कप के लिए भी एक आदमी चाहिए, 100 कप को बनाने के लिए एक ही आदमी चाहिए, है कि नहीं? करेक्ट? लेकिन वो आपको बोलेगा हम तो 20 कप करता था, हम 100 क्यों करेगा? हमको ज्यादा पैसा दो, पर कप का हिसाब से हमको 1 रुपया दो, हम जितना आदमी आएगा हम बना देगा। तो उसका जो लेबर पर कप हो गया, ये सपोज 1 रुपया हो गया, और 20 रुपया लेगा तो 20 कप करेगा, 100 रुपया लेगा तो 100 कप करेगा, तो वो भी है। लेकिन आपने एक दुकान में एक चाय देने के लिए एक लड़का रखा है, उसका काम है कस्टमर को लेके चाय देना है, ठीक है? उसको आप डेली आपको 50 रुपए लेता है, टी बॉय ये बनाता है, ये आपको उसको डेली लेता है। एक दिन सपोज 5 लड़का आए हैं चाय पीने के लिए, आप वो सपोज 50 रुपए लेता है, अब उसका पैसा कम करने से वो मानेगा? नहीं मानेगा। बोला सर हाँ, आप आदमी नहीं है, हम क्या करें, हम तो देने के लिए तैयार है, 50 रुपया मुझे चाहिए, डेली 50 रुपया चाहिए उसको। आपने एक दुकान लिया है, शॉप एक रेंट लिया है, आदमी आपका दुकान को आए या ना आए, दुकान बोलेगा क्या, मुझे भाई 100 रुपया जवाब था पर डे, 100 रुपया मुझे चाहिए, है कि नहीं? तो आप देख रहे हैं हर कॉस्ट जो है, ये सब आइटम का बिहेवियर अलग अलग है कि नहीं? वी आर गोइंग टू स्टडी दैट बिहेवियर। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट है, सबका बिहेवियर अलग है, कोई चेंज होता है प्रोडक्शन का हिसाब से, कोई चेंज नहीं होता है। तो उससे हमको आइडिया आता है 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट, वन इज वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, another is fixed cost, and there is another type which is semi variable cost. So ये तीनों कॉस्ट अगर हम जान लेगा, ये सारे आइटम्स मैंने अभी एग्जांपल में दिया है। अब मुझे बताइए ये वाटर इज क्या है? 1 कप के लिए मुझे अगर 30 ml 50 ml पानी चाहिए, तो 100 कप के लिए 50 into 100, है कि नहीं? सो इट इज प्योरली variable. Sugar भी सेम, है कि नहीं? If to maintain the same level of sweetness, you have to put 1 small spoon of sugar per cup. So 20 कप के लिए अगर 20 स्पून लगेगा, 100 कप के लिए 100 स्पून लगेगा। So this is a variable cost. टी लीव्स भी वेरिएबल, जितना बनाएगा इतना ज्यादा लगेगा। ग्लासेस, जिस ग्लास में पेपर सपोज इतनी पेपर कप, ये वेरिएबल। एक आदमी को हम एक कप में डाल के देगा, एक कप का दाम 50 पैसा है, तो ये भी हो गया हमारा वेरिएबल। इफ इट इज स्टील का ग्लास है, इट इज फिक्स्ड, बिकॉज वो ग्लास जब तक मेरे पास है मैं उसी को यूज करूंगा, है? अच्छा, ये भी हो गया वेरिएबल। गैस क्या है? गैस फिक्स्ड नहीं होगा, गैस वेरिएबल भी नहीं होगा,
we can call it, for the timing we will say fixed, क्योंकि हमको पता नहीं, हम महीने में एक सिलेंडर लाते हैं, हम इतना हिसाब नहीं किया है, so it can be now semi variable or fixed depending upon the consumption of gas. If we can identify how much I am consuming per cup, then it will be variable. Generally it is not variable, it is a miscellaneous, it is fixed. Now table chair, actually table chair I am only paying rent for table chair, I am not cutting table and putting in the chair. So it is not consumable, it is my asset. So for asset what I am charging? Depreciation. How much the cost of table chair I am using for making tea. So you have to remember this is a fixed cost. Utensils also same thing. I can use the utensils. I don't need more बर्तन. एक बड़ा बर्तन होने से उसमें 100 कम हो जाएगा. So this is also fixed. Electricity. If you are using electricity for lighting the floor, then it is fixed. एक बल्ब लगता है, एक पंखा लगता है, ठीक है? आपका 20 कप चाय के लिए जितना पंखा लगेगा, क्योंकि पंखा का जो खर्चा है वो आपका प्रोडक्शन का ऊपर डिपेंड नहीं होता है, पर महीना कितना लगता है या पर यूनिट कितना लगता है. सो ये तो हो गया फिक्स. अभी देखिए जिंजर वेरिएबल, बेलिक्स वेरिएबल, अब जितना डालेगा इतना फ्लेवर मिलेगा. इलायची से वेरिएबल, ये सब मटेरियल्स. इफ यू सी द कैटेगराइज व्हाई आई एम टाइपिंग, इसमें से जो जो वेरिएबल है mostly they are directly proportionately changing with my output. Okay, that funda is clear, which is variable, which is fixed. And fixed क्या है? मैंने समय का हिसाब से दे रहा हूँ, प्रोडक्शन का हिसाब से नहीं दे रहा हूँ. एक आदमी को मैं टी ऑयल का रखा है, उसको डेली दे रहा हूँ, डेली. It's not for cup or production. Whether I am producing or not, जैसे शॉप दुकान का भाड़ा पर मंथ I'm giving. ये सब टाइम का हिसाब से है, they are related to period. So fixed costs are known as period cost, because generally I pay for a particular period. They don't have any relation with my production. Okay, so now we have understood something by this example, variable and fixed. So all these expenses we can categorize based on their behavior. Based on the behavior, I can classify them as variable and fixed. This is one of the requirement in our study, which we are doing. Marginal costing. Okay. Now in marginal costing, we are going to study the behavior of cost in relation to variable and fixed. That's what we are going to study. Now with my last example, you have already got an idea what can be variable and what can be fixed. Now tell me what is a variable cost from your understanding. Cost which okay. See, if you see, I now this marginal cost like the SEMA London, what they have told. This is SEMA London, that is a body which is very oldest body in. They said I just explain in this. Reduction of total cost.
reducing 1 unit of production. For example, I am giving one example. I am doing 200 units and it is costing me 2050 rupees. Okay, total cost. If I produce 200 units, my total cost is 2050. If I reduce 1 unit, means I produce 199 units. That means I am reducing how many units? 1 unit. If I reduce 1 unit, this cost becomes suppose 2030. Now for 1 unit, how much I reduced? 20 rupees. So in this, 20 rupees is the variable cost. In other words, suppose the additional costs involved for making another additional output is my variable cost. मैंने जब 20 कप्स चाय का एग्जांपल दिया था, 20 कप्स के लिए अगर मान लीजिए 200 रुपया खर्चा होता है और 21 कप 20 फर्स्ट कप मिला के 21 कप करने के लिए मेरे अगर 203 रुपया खर्चा होता है, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 3 रुपया। 1 यूनिट मैंने बढ़ा दिया, मेरा 3 रुपया बढ़ गया है। सो मान लीजिए इसी में मैंने सपोज 22 कर दिया, ये 206 हो गया। दैट मींस मेरा पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इज 3 rupees. This is how the definition says. This definition is very valid. In your books you may find same definition or some other definitions. So now we know that what is the meaning of variable cost. Now let us have a test. Variable, fixed and semi-variable. How to know which is variable and which is semi-variable and which is fixed cost? For that you have to do some test. I have already told the same thing in your introductory classes. In variable cost, if it is variable cost, my cost per unit is fixed. You can write down, students. Please make a habit of writing so that when you go home you can see your note and remember. And cost per unit is fixed. Total cost is not fixed. These are the characteristics of variable cost. Here my cost per unit will be fixed or same. It doesn't change. But my total cost is changing. It will change. It will increase. So this is the characteristics of variable cost. Now in fixed cost, what is the characteristics? Total cost is fixed, or you can say it is the same. Cost per unit is not fixed or not same. चेंज हो जाता है। यहाँ पे I will give you example how it changes. अगर मेरा ये टेस्ट किया, ये दोनों में भी नहीं हुआ, then it becomes semi-variable. In semi-variable cost, total cost and unit cost are neither fixed nor same. ये neither this nor this. इसका हम एग्जाम्पल देंगे. We'll give one example, which is variable cost. For example, this room I have had. Okay. The room rent.
Room rent is 300 per day for this class. Okay. Now you see, I am giving 300 rupees. Suppose 10 students comes, total students. Now what is my cost per student? 300 by 10. My cost per student it is now 30 rupees per day. 30 rupees per student. This is cost per unit. Now it is second day. This is day 1. Day 2 only 5 students came. What is my cost per student? 300 by 5. How much? 300 by 5. 60 rupees. The next day, 30 students came. What is my cost per student? 10 rupees. And what is my total cost? 300 here, 300 here, 300 here. This is the total cost. Now you see, in this test, where it will fall? ये मेरे जो 3 टू टेस्ट है कहाँ फॉल करेगा? Is it variable cost? Fixed, sir. 300 is fixed. Yes, because my total is same. See here, total cost is fixed. That is how much? 500 rupees per day. कोई स्टूडेंट, sorry, 300, 300 रुपया पर डे. कोई स्टूडेंट आए ना आए, मेरे को 300 रुपया पर डे देना है. अगर स्टूडेंट आते हैं तो मेरा पर स्टूडेंट खर्चा कम हो जाता है. If I find out what is my per student rent, then यूनिट कॉस्ट, ये है यूनिट कॉस्ट. यहाँ पे 30 हुआ, यहाँ पे 60 हुआ, यहाँ पे 10 हुआ, सब बराबर नहीं हुआ है. So this is the example of fixed cost. We have made this test. It has passed this test, so this become a fixed cost. So remember, for knowing a fixed cost, you find out per unit cost will not be same, total cost will be same. Then it becomes fixed cost. Now we will give another example. Okay. Suppose same I am collecting some entry fee per student. जो भी आएगा ये रूम को वो मुझे 20 रुपया देगा. एक क्लास में बैठने के लिए 20 रुपया देगा. एंट्री फी इज ₹20 पर स्टूडेंट. यहाँ पे एक आदमी बैठेगा, जो भी आएगा 20 रुपया लेगा, अंदर घुस आएगा. तो मेरे को बताइए, पहला दिन मेरे को 10 स्टूडेंट आया है, तो आई हाउ मच आई विल कलेक्ट? 10 into 20, 200. सेकेंड डे मेरे को 5 स्टूडेंट्स आया है, 5 into 20, 100. थर्ड डे मेरे पास 30 स्टूडेंट्स आया है, तो आई सपोज इफ इट इज माय कॉस्ट, आई एम नॉट टॉकिंग रेवेन्यू, जो भी आएगा मैंने उनके लिए 1,000 रुपए का एक सामान देगा, एक बॉटल देगा, वाटर बॉटल देगा. दिस इज वाटर बॉटल दिया है, मेरा खर्चा हो गया. अब जितना बच्चे आएंगे मेरे को इतना खर्चा करना पड़ेगा, है कि नहीं? आपको देगा और उनको नहीं देगा ऐसा तो नहीं होगा. एवरीबॉडी विल गेट. सो यहाँ पे देखिए मेरा क्या हो रहा है. यहाँ पे देखिए मैंने पर स्टूडेंट पहला दिन 20 रुपीज लिया, सेकेंड दिन 20 रुपीज लिया, थर्ड डे भी 20 रुपीज लिया पर स्टूडेंट. सो इफ यू सी हियर, कॉस्ट पर यूनिट इज फिक्स्ड. Now what is fixed here? 20 per student. है कि नहीं? Total cost is not fixed. यहाँ पे देखिए टोटल 100 था, 200 था, 100 हुआ, 600 हुआ. So this is going through this test. This is the test for variable cost. So from this we know this water bottle cost per student is a variable cost.
Clear? Now you can find out if some cost you are knowing. Tell me mobile. What are you doing? See, don't please. If you don't come to class, it is okay. Please don't divert your mind. These things I am not teaching for myself. Remember, I am going to retire in another 5 years. I have studied. I have passed. Today I am getting 3 lakh rupees in my company. I want you people to study, get through, and be successful. So per month, right? Not per year, not whole life. Every month I am getting 3 lakh rupees. Just because I was attending my classes regularly, I was studying regularly, I passed in my first attempt, I competed, and I got a job. So you students have got potential. Please don't waste your time. When you have come to study, forget the work. You have to do only study. If you have any doubts, please ask me. I am there. I will try honestly to explain all your doubts. Okay. So I am trying to give you the concept. Okay. Now you have understood what is fixed cost and what is variable cost. Why I am telling you, in marginal costing, every now and then you have to arrange all the cost into these two groups. Unless you arrange these two into that group, you cannot proceed in marginal costing. So the cost which is not neither variable nor fixed, they are called the semi-variable cost. I will give some examples. Somebody was telling about electricity. Or I can say your. Now I will give you example. Is best example is mobile data. Okay, like you know your your monthly rental, monthly 199. It is you get 28 days, 1.5 GB daily. Okay. If you don't use 1.5 GB and ask the company to give you back, will they give you back? No. They will not give you back. So this is fixed. This is fixed. But suppose I am a postpaid subscriber. I am a postpaid subscriber. Every month I am paying suppose 325 rupees per month. But that gives me 60 GB data free. Right? And while using, I have used 100 GB. So my bill will not be 325. My bill will be 325 plus 40 GB cost extra. So this is a combination of fixed and variable. So the company will charge me per GB. Suppose they have a charge of per GB. Suppose मान लीजिए 25 rupees. Then I will be charged accordingly. So this is a combination of fixed and variable. This is fixed portion and this is variable portion. This is varying for GB 25. मैंने 1 GB करेगा तो 25 रुपया डालेगा, 2 GB करेगा तो 50 रुपया डालेगा. Accordingly, this is calculated. So this is a combination of. So this is a semi-variable. Now you understood what is the semi-variable cost. Yes. In costing, in marginal costing, there is nothing called semi-variable. आपका पास सेमी वेरिएबल आने से आपको तोड़ना पड़ेगा. How much fixed and how much variable in this? Unless you break this into fixed and variable portions, you cannot go ahead. Because marginal costing doesn't have any concept of semi-variable. In the exams, you may be having a semi-variable. What you have to do? You have to segregate. How much is the fixed element? How much is the variable element? We will study about that in detail later. I tell you how to do that. But trust me, this is not very difficult. It is very easy. So far, whatever I have told you, is it any difficulties?
You all understood the concepts? I did not refer any books. I did not told you any definitions. I have just tried to give you the concepts. Okay. For you to study the books line by line, understand. But before that, I just gave you the concepts so that you can do problems without any difficulties. Okay, line by line is something. What is marginal cost? What are the benefits of marginal cost? What are the disadvantages of marginal cost? They are all for you to study. I have taken for granted that you have studied everything, but unless you understand what is marginal cost, those studies have no meaning. Okay, and now I am telling you what is marginal cost. See, again I am telling you, we classify all cost into two parts: variable and fixed. These two, if I add, this gives me selling price. This is total cost. My total cost I am dividing into two portions. Okay. If I add here profit, this gives me sales. So in marginal costing, we are going to study only these things, nothing more. Okay. If somewhere you get B, it is variable cost. If somebody is telling F, it is fixed cost. If somebody is telling P, profit. Somebody is telling S, sales. Just remember, these are not very difficult things. You will be gem of all things. Now, what is that? See, I tell you, somebody may tell C. What is C? In marginal costing, C means not cost. C is something coming out of this. I am going to tell you. Now see, what is variable cost? Tell me. Remember our example of tea. When I told you about tea, what comes to your mind? The main ingredients which I am consuming is the variable cost, right? Which is directly the raw materials or the main components. जैसे आपने जो एग्जांपल दिया है, आपने ये जो एग्जांपल दिया है, देखिए मैं क्या क्या कंज्यूम करता हूं. Okay, one by one, let us see whatever things I am consuming. What are I consuming? Consuming क्या? I'm taking inside. When I'm drinking a cup of tea, all things, the flavors from this milk. इसको नहीं खा रहा. Ginger, bay leaves, इलायची, लौंग, इसको मैं खा रहा हूँ. इसको कैसे खाएगा? कोई तो बनाएगा तब खाएगा. तो बनाने वाला का भी खर्चा डायरेक्टली लगता है. वो बना दिया तो उसका कॉस्ट भी मैंने खा लिया. खा लिया मतलब आई कंज्यूम द लेबर कॉस्ट आल्सो. एंड यहाँ पे लाइक व्हाटएवर these things are fixed. So variable cost, which is the total cost of like direct material, direct labor, direct expenses. They are the variable cost which I am taking inside or I am consuming, or it is used for my main production. Suppose you see this plastic. What is the variable cost in this? The plastic. If I have to make 10 pens, I need 10 times more this plastic. And if a laborer is making this in 100 rupees, he will charge for 5, he will charge 100 into 5, isn't it? So these are all, you can by examples you can understand how the behavior of variable cost. But you see, as I understand, variable cost constitute a major portion of my product. My product, if I see this is giving me my major product. Suppose if my total cost is 100,
I can find out variable cost per unit easily. Like it, because it is changing per unit, I am able to calculate. Suppose total is 100, variable is 80 rupees. Okay. Now, but fixed cost per unit finding is very difficult, isn't it? Jamela hai. How do you find out the room rent per cup of tea? Can you find out? No. But you can find out what is the cost of 1 spoon of sugar. 1 kg, if 100 spoons, 1 spoon is like that, you can find out. But it is very difficult to find out the cost per unit for the fixed costs. Okay. So what we do for fixed cost, we don't calculate per unit. It is total. So variable cost, it is used per unit. But fixed cost used in total. Let us come to our P example. Suppose my direct cost, direct material, direct labor, direct expenses per cup, it is suppose 6 rupees per cup. That means I need material, labor, expenses मिला के 6 रुपया per cup per cup of tea. But in addition to that, I need suppose rupees 1000 rupees per month fixed cost. That includes my salary of tea boy, जो टी देता है, जो बनाता है नहीं आ गया, ठीक है. देन मेरा दुकान का रेंट, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, everything is fixed. कितना? 1000 rupees per month. So this is my fixed cost. This is my variable cost. But you see how I am writing. This I can write per unit directly. But इसके लिए मैं per unit निकालना मुश्किल है कि नहीं? So मैं इसको total ले लेता हूँ. मेरे को यही चाहिए. In marginal costing, we do not write fixed cost per unit. Remember, that is a very important thing. मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट करने का कोई जवाब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है. क्योंकि आप देखिए, ये पर मेरे को अगर 10 रुपया है, सेलिंग करता हूं, मेरे मटेरियल के लिए बड़ा कितना चाहिए? 6 रुपया. बाकी जो 4 रुपया मिला है, मैं सपोज ये सेल करता हूं, मैं 10 रुपया में बेचता हूं, एक कप में 10 रुपया में बेचता हूं, मेरा को मटेरियल खर्चा कितना हुआ? 6 रुपया. तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ? क्यों नहीं हुआ? वो 4 रुपया मेरे को आ गया, उसी से मैं प्रॉफिट में खर्चा फिक्स कॉस्ट देने के बाद जो बचेगा वो प्रॉफिट होगा, है कि नहीं? मान लीजिए उस महीना में, यही एग्जांपल में आप देखिए, मैंने सपोज 500 कप बेच दिया, 500 कप सोल्ड. इस महीना में मैंने 500 कप बेच दिया. नाउ मैं टेल मी 500 कप कितना बेचा मैंने? 5000 रुपीस का मैंने बेच दिया. ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया, ये मेरा सेल्स हो गया. नाउ टेल मी व्हाट इज माय वेरिएबल कॉस्ट. एक कप को 6 रुपया लगता है, 500 कप को कितना लगेगा? 3000 रुपया लगेगा. तो मेरे को कितना मिला प्रॉफिट? प्रॉफिट मिला 2000. अभी तक मेरा फिक्स कॉस्ट मैंने चार्ज नहीं किया. तो ये जो मिला है, ये मुझे कंट्रीब्यूट करता है टू मीट माय प्रॉफिट. सेल्स से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट हटा देता हूं, जो मिलता है उसको हम मार्जिनल कॉस्टिंग में बोलेंगे क्या? कंट्रीब्यूशन. इसको मैं बोला था सी. नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज सी. सेल से वेरिएबल कॉस्ट जाने से मेरे को जो मिलता है वो प्रॉफिट का बराबर है, लेकिन प्रॉफिट नहीं है. क्यों नहीं है? उससे का बाद भी मेरा फिक्स्ड कॉस्ट जाएगा, तब प्रॉफिट होगा. तो मेरे को कंट्रीब्यूशन मिला यहाँ पे 2000 रुपीस. एवरीबॉडी अंडरस्टूड हाउ द वर्ड कंट्रीब्यूशन हैज कम? बिकॉज़
It contributes me towards profit. It's not the profit. अगर मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा. फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है तो प्रॉफिट कम होगा. और नुकसान भी हो सकता है. So luckily I have got only 1000 rupees is my fixed cost. So my profit how much? 1000. This is how. See here what I will do. इतना लिखने का जरूरत नहीं है. मैं एक सिंपल तरीका निकालता हूं. मैंने निकाल दूंगा. ये जरूरत नहीं. आई विल फाइंड आउट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. एक कप चाय में मुझे कितना कंट्रीब्यूशन मिलता है मैं निकाल पाऊंगा, क्योंकि सेल्स पता है कितना है 10 रुपया. वेरिएबल कॉस्ट कितना है 6 रुपया. ये जो बच गया ये हो गया मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. मेरे को एक कप बेचने से मुझे 4 रुपया मिलता है. दैट इज माय कंट्रीब्यूशन पर कप. मैंने कितना बेचा है तो 500. मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन विल बी. पहले हमको टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा. 4 into 500 is equal to rupees 2000 less this cost. यहाँ इतना कैलकुलेशन नहीं करके हम ये छोटा सा कैलकुलेशन करने से भी आपको प्रॉफिट मिल जाएगा. ये हो गया मेरा प्रॉफिट. अच्छा, ये सिंपल एग्जांपल सबको समझ में आ गया. दिस इज छोटा सा एग्जांपल आई गेव यू. इतना आप देखिए. यहाँ पे मेरा को ये सेल्स मिला, वेरिएबल कॉस्ट मिला, कंट्रीब्यूशन मिला, फिक्स्ड कॉस्ट मिला, प्रॉफिट मिला. नाउ वी गॉट द रिलेशनशिप. आपको मिल गया रिलेशनशिप. मैंने जो आपको बोला था सेल्स, देन आपका क्या बोला था प्रॉफिट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन. ये सब टर्म्स आप अभी आपका सामने है. ठीक है. एग्जांपल मैंने दिया था. यहाँ पे देखिए 10 रुपया प्रॉफिट. प्रॉफिट आ गया कितना हुआ 1000 रुपया हुआ. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना हुआ 6 रुपया. फिक्स्ड कॉस्ट टोटल 1000. कंट्रीब्यूशन कितना हुआ आपका सामने है. ठीक है. नाउ यू फाइंड आउट द रिलेशनशिप. यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वो भी लिख देता हूँ. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4 रुपया हुआ. एक सबसे मुझे यही देखता है एस माइनस बी इज इक्वल टू सी. एवरीबॉडी कैन फाइंड आउट. सेल्स से मैं अगर वेरिएबल कॉस्ट निकाल देता हूं, जो बचेगा वो कंट्रीब्यूशन है. क्लियर. नाउ सी इज इक्वल टू C is equal to contribution. इसका रिलेशन क्या है? A plus P. यहाँ पे हम देखा था कंट्रीब्यूशन कितना 2000 है. 2000 कंट्रीब्यूशन 2000 है. 2000 is equal to this plus this. प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट. ये भी आपको मिला. कंट्रीब्यूशन is equal to A plus P. Then what else relationship you will get? आपका आप देखिए. और एक बात मैं बताता हूं. सेल्स इज वेरिएबल. एक यूनिट बेचने से कितना मिलेगा 2 यूनिट मिलने से 2 गुनी मिलेगा. 3 मिलने से 3 गुनी मिलेगा. सो इट इज वेरिएबल. ये भी वेरिएबल. सो कंट्रीब्यूशन आल्सो वेरिएबल. For every product, contribution is directly variable. Suppose हमारा एग्जांपल देखिए. अगर 100 is the sales and 40 is
variable, then contribution कितना होगा 60. That means ये दोनों मिलाने से 100 होगा. Sales plus variable cost is equal to sales. ये भी है. मान लीजिए ये हमारा 80 है, ये कितना होगा इजीली कर लो. मान लीजिए आपको ये पता है ये कंट्रीब्यूशन 30 है, ये कितना होगा 70. So you know there is a relationship between these two. These two will be always complementary to each other. अगर ये बढ़ेगा ये घटेगा, ये घटेगा ये बढ़ेगा, है कि नहीं. मुझे एक बात बताइए, ये जो कंट्रीब्यूशन 30 है, दूसरा सिचुएशन में ये 100 है, ये 60 है, ये कंट्रीब्यूशन 40 है, ये दोनों में से कौन सा अच्छा सिचुएशन है? एक सिचुएशन ये है, मेरा 100 सेल्स है, वेरिएबल 70 है, कंट्रीब्यूशन 30 है. दूसरा में 100 सेल्स है, वेरिएबल 60 है, कंट्रीब्यूशन 40 है. कौन सा अच्छा है दोनों में से? सेकंड वाला ना. क्यों? यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ज्यादा है. मतलब मैं एक कप चाय बेच के यहाँ पे 4 रुपए मिलता है, यहाँ पे 3 रुपए मिलता है, तो ये दिस इज मोर प्रॉफिटेबल फॉर मी. तो ये आपको ध्यान में रखिए, अगर मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा है, मेरे पास 4 प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट में ज्यादा मिलता है वो मेरे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि दिस विल कंट्रीब्यूट मोर टू मीट माय फिक्स्ड एक्सपेंडिचर्स एंड जनरेट माय प्रॉफिट. वो भी आपने थोड़ा आइडिया कर लिया ना. कभी भी देखिए, जिस प्रोडक्ट का आप जो बिजनेस करते हो, जिससे लाभ ज्यादा होता है, आप वहां पे जाते हो, है कि नहीं. वेरिएबल कॉस्ट तो आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, यू हैव टू मीट द एक्सपेंडिचर्स. अगर चाय में ज्यादा पानी डालेगा तो बेचेगा नहीं, तो जितना चाय का दूध देना है इतना ही देना पड़ेगा आपको. जैसे ही पानी डालेगा कस्टमर भाग जाएंगे. तो कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी में नहीं होता है. Variable cost will have to be met. You cannot reduce it. So this is, I have just given you some examples of. We have another 15 minutes. Now today we have got an overview of variable cost, then fixed cost, contribution, then sales, profit. बेसिकली ये दोनों का ऊपर हमारा कुछ कंट्रोल नहीं है, हमारा कंट्रोल ये तीनों में है. एंड बेसिकली इन वेरिएबल कॉस्ट, इफ इट इज गिविंग अस मोर कंट्रीब्यूशन, वी नो दैट दिस इज ए बेटर प्रोडक्ट फॉर अस. ओके, नाउ we'll see. Let me see the book. I don't know what is there in the book. I have told you fixed cost, variable cost, semi-variable cost, marginal costing. Okay. Now, every game has some rules. जब तक अभी तक मैं जितना आपको बोला है, what are the key essentials of marginal cost? Can somebody tell me? I've already told you. I want to hear from you. What are the essentials of marginal costing? Every cost, total cost has to be divided into 2 groups, fixed and variable. So all costs to be divided into fixed and variable categories. That is the first assumption, first essential. Now,
here I have given the example of tea. It is assumed that all that produced are sold. है कि नहीं? मैंने जितना चाय बनाया सब बेच दिया, तब तो मेरा प्रॉफिट हो रहा है, नहीं बेचने से लॉस देखना पड़ेगा. So all that produced are sold. और यहाँ पे देखिए, सपोज बच गया है और एनी स्टॉक. Sir, that's going to be all cost to be divided into two category, that is fixed and variable. All costs has to be divided into two category, that is fixed and variable. If you have semi-variable, I am giving another thing. Semi-variable cost also to be broken into fixed and variable. If you have semi-variable cost, that has to be broken into fixed and variable cost. See, for any stock, it has to be valued with variable cost only. If anybody has studied group 1, in group 1 you might have studied about absorption costing. Like what happens, fixed cost we put some portion of the fixed cost in the cost, but in marginal costing we don't put any fixed cost to the stock, only valued at the variable cost. Any stock I am holding at the end of my day, I am treating them as variable cost only. Okay. And why I am not adding this fixed cost to the stock is because all fixed costs are treated as period costs. I have told you already, because they are paid for a particular period, so they are charged to the expenses, and when incurred. जब भी आपका कोई रेंट देता हूं मैं मेरा खर्चा में बुक करेगा, क्योंकि चाय में डालने से नहीं होगा. जब कंट्रीब्यूशन मिलेगा तब मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा. ओके, सो फिक्स्ड कॉस्ट आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट and charged to expenses as and when they are incurred. This is also one of the characteristics. And how do I know my profitability? Profitability depends upon contribution. Profitability depends upon contribution. अगर contribution नहीं है, आपको profit नहीं होता है. Expenses as and when incurred. As and when incurred. जब charge to expenses, जब भी आप rent देते हो, आप expenses को book कर लेगा. It will not be shown under my product cost. Period cost means जो rate में दिया हूँ, रेंट दिया तो मेरा खर्चा में बुक कर दिया. इट इज माय फिक्स्ड कॉस्ट. सो फिक्स्ड कॉस्ट का हम लोग को प्रोडक्शन में हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, तो देना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये बिजनेस का कॉस्ट है, इसका प्रोडक्ट नहीं बनने से इसका कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है. सो दीज आर ऑल एसेंशियल्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग. एंड सी, आई एम टेलिंग दिस एसेंशियल्स. I am assuming that, see, अगर ये होने जैसे आपको कुछ assumption भी होता है. What are the assumptions? Fixed cost will remain fixed. That behavior if it changes, मेरा marginal costing गड़बड़ हो जाएगा. तो all fixed cost will remain fixed.
नहीं तो मेरा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं? एंड वेरिएबल कॉस्ट आल्सो रिमेन वेरिएबल. Variable cost remain variable throughout. आज वेरिएबल हुआ, कल भी वेरिएबल होगा. जैसे कि मैंने आज एक कप चाय के लिए मैंने 30 ml मिल्क डाला है, कल भी वही 30 ml डालने से होना चाहिए. अगर मैं डालता हूँ और दूध सूख जाता है, वो दूध का वेराइटी खराब हो गया, तो मेरा वेरिएबल कॉस्टिंग काम नहीं करेगा. ओके, so these are all the assumptions. And again I am telling very important is my selling price also remains same. मेरा सारे कॉस्टिंग कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? सेलिंग प्राइस से मैं वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड करता हूं. अगर मेरा सेलिंग प्राइस चेंज हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन भी गड़बड़ हो जाएगा. तो सेलिंग प्राइस आल्सो रिमेनिंग द सेम. ठीक है. So these are all the basic assumptions. You can in books you can find some more points. Now with this understanding, we can shall we stop or now today it is enough. Okay. If I give you more, you will be confusing. Now somebody can tell me what did we learn today? बोलिए, आप बोलिए. आपका नाम क्या है? दीपिका, वृतिका. ओके वृतिका, टेल मी व्हाट डिड यू लर्न? बैठिए. यस, देन अब बोलिए और क्या? सेमी वेरिएबल. और क्या सीखा है? अब बोलिए. कंट्रीब्यूशन, वेरी गुड. अब बोलिए. Relationship between sales and variable cost. Yes. What else we learned? Rules of Marginal costing rules. उसका क्या क्या essential है? And what else we learned? Assumptions. Now you please go to your home, study what are the benefits, what are the limitations. Next class we will study about further relationship, little more with some more illustrations. I will give you some problems. We will study about break-even point, and we will study about margin of safety. Okay, these are all very important terms. Angle of incidence. These are the things you may be thinking it's nothing difficult. I'll explain you. These are all the things just study, and we will in detail will study and do some problems. Okay. Okay then. Thank you for your kind hearing. Any doubt from my distance friends? Any doubt? No.